all, a warm welcome to all of you in the 10th session of Chess with Gaurav Bakliwal Season-2. I am Ridhan Sharma from Mumbai, India. It's my privilege and honor to be volunteering for today's session. Today's game was played... Ridhan, your camera is not on. Please on your camera. Sorry. Please start again. Hello all, a warm welcome to all of you in the 10th session of Chess with Gaurav Bakliwal Season-2. I am Ridhan Sharma from Mumbai, India. It's my privilege and honor to be a volunteer for today's session. Today's game was played in USA between Marshall and Laskar in 1907. This game is described by experts as Zugzwang, an invincible weapon. After that, Gaurav sir will show an amazing move of the day played by August in 1907. So without wasting much time, I would like to invite our own Gaurav sir to take this session forward. Thank you so much, Ridhan. Thank you very much. Right. And now you can just switch off your camera for some time. Okay. I'll when I share a screen, you can on it again. Okay. Thank you so much, Ridhan. What a nice introduction and such a young age, and very well said. And good evening, audience. Good evening, everyone. I hope you guys are doing very well. And it's my pleasure and privilege to take this 10th session. देखते 10th session हो गया यार season 2 का, और season 1 के 24 sessions are already there in YouTube. आप देख सकते हैं. It's my pleasure. And I can see a lot of good people here. Sharvi is here, of course. Arjun is here. Sakib, Jaswant, Rahul, Arisha Jain is here. Okay, very nice, very nice. So today's game, my dear friends, good evening, everyone. Good evening. Now today's game is between Marshall and Laskar. So this game was played in 1907, and it was the World Championship game number 1 of the World Championship. So Marshall qualified, and Laskar was the current world champion, the reigning world champion at that time. Now this first game was very important and very crucial because lot of experts and lot of world commentators had different views about it. Marshall was in very hot form, and Laskar became world chess champion. He was from Germany, and he was a great mathematician. He was a great psychologist. He wrote so many articles in algebra, which was his favorite topic in maths. And he became world champion in 1994 by defeating William Steinitz, the first world champion. And Laskar was a very psychological and a very, I would say, very practical kind of a chess player. His moves, people used to say that he used to play inferior moves, he used to play bad moves to confuse his opponent. But then results are results. He was a world champion for 27 years, from 1894 to 1921. And which has been the largest reign so far. I mean, of course, Magnus Carlsen might be listening, but that is the longest reign so far in the history of world chess champions. So coming back, Laskar was a very psychological player, and if you take this game in 1907, he did not perform that well in the past 3, 4, 5 years, and he was losing some tournament. He was coming 3rd, 4th. Whereas Marshall was in red hot form, and he won 1904 Chess Open ahead of Laskar. So people were contemplating that this would be a great tournament, and Marshall will give a huge fight to Laskar and all these kind of things. Now coming to this particular game, that is why this is very important, because this was the first game of the World Chess Championship 1907. Now coming to Marshall, he was from USA, and he never became world chess champion. 1 year back in 1906 or 1905, and he played with Teres, who was a very strong chess player, and he lost to Teres by 8-1. Marshall, although he was very good in one individual game. If you remember, I showed you one move of the century which was from Marshall only. So he was a very attacking chess player, very attacking. But his endgame skills were at question mark. People used to question his endgame level, technique, and so on. So Marshall lost 8-1 to Teres, and then this particular match, World Championship final, happened with Laskar.
एंड मार्शल थॉट कि 8-1 से ज्यादा बुरी तरह तो मैं क्या हारूंगा लाइफ में. But we are wrong. We never know what words can happen. And I'm sure intelligent audience have guessed by now. This World Championship, Marshall lost 8-0. Can you believe? So there were 8-0, 8 draws, and 8-0. 8 games he lost in a row. So this is a very interesting game. First of the game. Yes, good evening, everyone. Good evening, Saket. Good evening, Rahul. Okay. Now let's take this game, my dear friends. Let me start and let me try to see if I can share the screen for you. All right. So this is our game. Let's start the today's game. Yes, Ridan, I can see you. Very good boy. Yes, this is our game. Game 10. Now this game is called by experts as Zugzwang, the invincible weapon. So if I can ask you to begin with, a very smart audience I have, can you write in chat? And of course, Redan, you can speak up if you wish. What is the meaning of the word Zugzwang? Yes, audience, please write in chat. Type of a mate. Arjun is writing type of a mate. Zugzwang. Want to pass moves. Zugzwang means when a person can't make a good move. Well done, Sharvi. Arav, when a player doesn't have a good option. Well done. Yes, Zugzwang. Ridan, would you like to say? बोलना चाहते हो रिदान? Same type of method. A type of mate. Okay. Now Zugzwang, आरव ने जो शार्वी ने कहा है वो एकदम सही है. Zugzwang is a position when whatever you play, you have to make a move in chess, and whatever move you play, you will have some disadvantage or the other. That particular situation is or position is called as Zugzwang position. तो आपने कोई भी चाल चला, आपने अपनी पोजीशन और माइनस करवा ली, कुछ भी अच्छी चाल चलने को नहीं है, घोड़ा मर रहा है, हाथी मर रहा है, कौन मरेगी, राजा एंटर कर जाएगा सामने वाले का, व्हाटएवर. तो दैट काइंड ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज जुगजुआंग, एंड दिस गेम इज called as experts Zugzwang, the invincible weapon. Anand is here. Hi Anand, good evening. Okay, now let's see the game. Marshall versus Laskar, round 1, World Chess Championship final. So let's flip the board, my dear friends. हम देख रहे हैं लास्कर की तरफ से, ब्लैक में लास्कर है. तो E4 से गेम चालू हुआ था, E4 E5, ओके, एंड नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5. सो दिस काइंड ऑफ ओपनिंग इज कॉल्ड एज रॉय लॉपेज. इसको बोलते हैं रॉय लॉपेज, RUYLOPEZ, रॉय लॉपेज. तो अब इसमें ब्लैक के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं. A6 बेस्ट चाल मानी जाती है, एंड बिशप A4 आता है, फिर नाइट F6, कैसल, और ये सारी चीजें इसमें चलती है. Now here Laskar played the move knight F6. He did not play the move A6. तो 100 साल बाद ये गेम खेला गया 1907 में. आप इमेजिन कीजिए. और 93 साल बाद, साल 2000 में, this move was very popular. This move was very popular. It was made popular by Kramnik. अगर आपने नाम सुना हो वर्ल्ड प्लेयर का, Kramnik, against the mighty Garry Kasparov. So this move actually is a very old move, but it was made popular by Kramnik, and he used it quite successfully against Garry Kasparov, and Kramnik defeated Garry Kasparov in the year 2000 in World Chess Championship. So can anyone tell me, audience, is knight F6 को क्या बोलते हैं? What is this variation called as? रॉय लॉपेज तो है, बट रॉय लॉपेज का कौन सा वेरिएशन है? What is this called as? Yes, audience. एक्सचेंज. नो. एक्सचेंज तो जब होता है जब वो बिशप इंटू नाइट मारता है, A6 बिशप इंटू नाइट, दैट इज एक्सचेंज वेरिएशन. अर्जुन इज टेलिंग नो आइडिया. साकेत इज टेलिंग बर्फेनिक, 2 नाइट वेरिएशन. नो. तो इसको बोलते हैं बर्लिन. दिस इज कॉल्ड एज बर्लिन डिफेंस, BERLIN. तो बर्लिन डिफेंस, इट वाज मेड वेरी पॉपुलर बाय क्रैमनिक. तो अब गेम देखते हैं आगे हम. नाइट F6, ओके. अब इसमें बहुत ऑप्शन है व्हाइट के पास. कैसल इज द बेस्ट ऑप्शन, ऐसा बोला गया है. D3 करके एक चाल है, बट व्हाइट चोज हेयर D4.
अब यहाँ पे बहुत वेरिएशंस है. Knight into e4 is one of the variations. So the game might continue here. Knight e4, pawn into pawn, d5, knight to d2, bishop d7, castle, bishop e7, knight b3, knight into pawn e5. क्योंकि अगर आप हमारा पीस मारेंगे तो हम ये वाला पीस मार लेंगे. And then bishop d7, knight takes, queen d5, pawn वापस हो गई बराबर, and knight d6. So knight is supporting b7, but this is, I would prefer white playing here, although equal position है, but इनके मोहरे थोड़े अंदर हैं, and white has got open line, the rook a d1, rook a f1 will come in, so I'll prefer white here. So coming back, एक option knight d4 है. It is not very good move क्योंकि after knight into knight and pawn into, you can play, or c6 is the best try here. So bishop c4, pawn into, and b5. So you almost equal baji hai, but still this bishop is a problematic. It's not very good. तो ये अच्छा इतना अच्छा नहीं बताते हैं. तो यहाँ पे d4, ed4 was played here in the game, which is one of the best moves actually, ed4. So after this, white has got various options to continue, and one of the best option can be pawn to e5. The other option can be castle. The other option can be knight into d4. So here, Marshall chose castle, which is okay, no problem. Bishop e7, very logical move, trying to take out the piece, getting ready for castling. कोई problem नहीं है यहाँ पे. Now the move played is e5. Very interesting move. e5, attacking the knight. So in this position, you can have one idea. Instead of e5, you can go for knight d4 here. And in that case, knight into, queen into, castle, bishop to e3, knight to c3, e6, bishop e2, d5, pawn into, pawn into. First bishop e6, because it's pin right now. You can't capture. And then I will capture pawn into pawn next. So this is almost equal position, with again slight better for white. This is one of the options here. So coming back to the game, my dear friends, castle, bishop to e7, e5 was played by white here, e5. Now this position becomes very interesting, and a lot of people, world level players, have done the lot of annotations for this game. And Gary Kasparov, Terrace, Reti, so many people have done annotation for this game here. Right. So let's see what happens. Knight can now go to e4 as well, or it can go to d5 as well. Both are good moves here. But as I told you, Laskar was a very psychological kind of a player. He was a very psychological player. So knight d5 is, although you would say that it's a very logical move, but Laskar chose knight e4 because he knew that Marshall wants to attack. He would not like to be attacked. Please understand. Marshall wants to attack, but he would not like to be attacked here. So knight e4 is a very psychological type of a move actually. And sooner or later, you will see that some kind of attack is going to come on f2. Although right now it doesn't seem so. Now rook e1 is one of the options here, which is probably a better idea. And after knight to c5, and then we can go with knight into d4, and the queen can come to d4. We can save it on e4 after knight e6. So again, in all positions, white is doing slightly better. White is better in all the positions. Now let's see what happened in the game. Instead of rook e1, Marshall chose to capture knight into pawn. And now black simply castled in this position. There is no need to play knight into knight, not required, and simply castle. And inviting white to play knight f5, which is not a very good move here. Not a very good move. So here the correct continuation probably, instead of knight f5, which was played in the game, bishop f4, rook e1, they are all better moves actually. But white chose knight f5, and the idea is to capture this bishop, knight into e7. That is what his idea is.
He wants to capture the dark square bishop. That's good enough. And now Laskar played a very good psychological move, d5. Very nice move. Now you have got various options. You can capture en passant, you can capture knight into bishop, or you can capture bishop into knight as well. So many things are there. So Marshall thought that if I capture knight into bishop here, then this knight will come and d5 will be supported. c6 can also be played, and this e5 pawn, he's not very sure, he's not very sure, although f4 is a very nice idea. But again, that's what he thought. And in this position, he did not go for knight into bishop. This should have been played here. If you are going knight f5, come on, capture it. So what did he thought? What did he think rather? He thought that let me first capture the knight and then I will capture the bishop. What's the problem in life? And with this thinking, my dear friends, Marshall captured bishop into knight. And here comes your first error of the game. Bishop into knight is the first mistake. This is the first mistake. So why it's a mistake is that after the simple pawn into bishop, this looks as a double pawn, but now this is supporting the d5 pawn, and there is a lot of support on it. This pawn is supporting its center, and it's very permanent support. And now once you capture here, which you have to, that is why you played knight f5 at the first place, and after queen into knight, now look at this position, my dear friends. I want you to understand this position. Audience, please take some time and understand this. Don't you think black is doing very well in this position? Don't you think so? White's pieces are all inside, and whereas black knight is e4 is very, very good. This bishop is developed. It can come to a6 also. It can come to g4 also, if permitted later on. And this pawn is directly attacked here, and for all you know, it can be a weakness as well, if not strength. You can't of course play f4 here, because queen c5 immediately is finishing the game. It's all over. Thank you very much. So this position, if you see very carefully, if the audience is smart enough, then white played knight f3, white played knight d4, white played knight f5, and white captured the knight into bishop. I mean, what? You are moving 4 moves with the knight to capture one piece. You are 3 moves behind in development, my dear friends. Do you agree with me or not, audience? Please write in chat. तीन चाल आप पीछे चल रहे हो white होकर. Yes, Arjun, Saket, Ilakshi, yes. क्या बोलते हो Ridan? Do you agree or not, Ridan? You can speak up. Ridan, you have got the power which nobody has. तो तुम्हारा जब मर्जी है, you can speak up. Unmute करो, बोलो. Yes. Yes. You have the power, Ridan, today. You must use your power. जैसे वीडियो गेम खेलते हो ना, वीडियो गेम में नहीं होता, पावर आ जाती है, फिर उछल के मारता है वो, फिर पावर कलेक्ट कर लेता है. हाँ, राइट. तो इन दिस पोजीशन ऑफ कोर्स ब्लैक इज बेटर, जबकि व्हाइट की केवल एक गलती है कि उसने यहाँ बिशप से नाइट मार दिया, तो ये सेंटर भी सिक्योर हो गया, और ये नाइट f5 जाके उसने इसको मार दिया. अब ये पोजीशन बहुत भयंकर एनालिसिस करने लायक है, बहुत ही जबरदस्त पोजीशन है ये. तो कास्परोव ने इस पोजीशन के लिए बोला है कि आई वुड प्रेफर प्लेइंग ब्लैक इन दिस पोजीशन. So lot many people have analyzed this game. If you want, I can share the link also on the chat, and you must see the commentary given by Dr. Teres, Reddy, Kasparov, move by move. बहुत अच्छा लोगों ने इसको analysis किया. I have seen their commentary. I have seen 2-3 videos as well for this game. So Kasparov has said that I want to play black in this position, and there are some people who have written that this is more of a psychological move rather than a good move. So coming back, yeah, I will share, Arjun. I will share the link, surely. Now, Rook E1 was played here. Rook E1.
So the idea of rook e1 is more or less forced to protect the e5 pawn, because now if you capture queen e5, you are the biggest fool on earth. You are getting pin your knight without any effort by white, and simple f3, and it's all over for black. Finished. There is no defense. Queen d4 check is also not coming. So rook e1 was played indirectly, protecting the e5 pawn via x-rays. And now the move played by Laskar, the world commentators, the world annotators were surprised, were taken as surprise. The correct move which computer says is rook e8, which is a very good move here, which should have been played. But Laskar, as I told you in the beginning, he was a pure psychological player. And he played the move queen h4, attacking on f2. And he knew that Marshall will do some wrong moves, dubious moves, and I will take advantage of them. I will take advantage. He knew that. So after queen to h4, idea is to attack on f2. If you play bishop to e3, that is one option you have, or you can play pawn f3. So pawn f3, if you play here, it is not very good, because I can simply play queen f2 check, and now I can save my knight to c5 as well. So coming back, bishop e3 was played in the game, protecting this. And now the move of, I would say, the best move here will come. And can audience guess this move? Yes, audience, can you write in the chat? So he had this idea when he played queen h4, knight e4. He knew that this position will come. And audience, what is the move here? Bishop h3 is written by someone. Bishop a6 is written. Okay. Audience, can you guess? I will do poll very shortly. But can you guess here? Bishop b7. No, no, no. This is very bad move. Very bad. No. What is your bishop doing here? Nothing. No, 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 no. Now he wants to play f3. You have to understand the move of white. Knight c5 is stopped. So you must do something very fast. f5 can be one idea. f5. Knight g4 is written by Arav. Knight g4. How can you play e4 to g4? No, 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 no. Bishop to g4. Okay, that's f3. And then your piece can go. Knight to g5, he means to say. Oh, I see. So what's his name? His name is Arav. Let me call him Aram or Aras, something like that. Okay, f5. f5 is told. f6 किसने बोला है? Oh, ho, ho. Somebody said f6. Arjun has written the move f6. f6 is written. Knight into f2 कौन बताया? Knight f2. Sai Jaswant. Okay, Mr. Sai Jaswant is here today. Very nice. So knight f2, bishop f2 पे कुछ मिलेगा नहीं बेटा. The correct move is f6 here. Very, very interesting idea. And he wants to maybe give a piece away. I don't know. If you capture ef6, then obviously knight will come back. And knight g4 can come in, attacking on h2 and again f2. The rook will open up and so many things. f6. Okay, Arav, very good, very good. So f6 was played in the game. And now white played the move f3, my dear friends, attacking the knight. And here comes the pole. Oh, ho. Wow. Let's see the poll. Ridan, you cannot participate today in the poll. You just have to watch it. Okay, what surprise move did black play here? What surprise move did black play here? What surprise move did black play here? So what surprise move did black play here? F into e5, knight to g5, knight f2, or any other move? What surprise move did black play here?
And wow, 44% of the audience are going with f into e5. Okay, and let's now end the poll and share the results. 50% are going for f into e5. 0% of the audience are knight g5, 10% on knight f2, and 40% are any other move. Okay. So f into e5 was the first surprise of the game, and Marshall was taken a bit surprised here. What is he doing? There is a simple piece which is attacked. What is he doing? F into e5. What a nice psychological move. Wow. So here, let's do the analysis for knight g5, which was what Marshall thought that Laskar would play, because knight c5 is out of question, knight d6 is out of question. And here after bishop to c5, rook e8, bishop f2, queen to b4, h4, my god, knight e6, and pawn into pawn. Black position is very bad, let me tell you. It is amounting to resigning actually. Computer gives 1.1 plus here, very bad position. And that was what Marshall thought. But the moment f into e5 was played, Marshall was surprised. And as Gary Kasparov said, Marshall likes to attack and he does not like to be attacked. And this is a psychological advantage or the benefit which Laskar wants to take. And he's offering a full piece here. So after pawn into pawn, audience, very easy move. Very easy move. What is the move played by black? Very easy. Please write in poll. Please write in chat. Very easy. D4, D4, D4. Wow, what an audience. D4 is the move. You have given a piece and now we are attacking the piece. D4, what a nice move it is. So now where will the bishop go? I am trying to attack bishop. So if you try to protect piece, for example, bishop D2, for example, will you believe me that white is going to get checkmated here? Will you believe me? And the move is bishop to G4 with the support of the queen. So there is only one place, and now the queen comes to F2. And now rook will come to F2 first, not queen. And the idea of rook F2, oh my god, is to play rook G2, queen H3 and bishop F3. It's clear resign. There is no defense. There is no defense. Bishop F3 can directly come as well instead of rook G2. Because if you capture GF3, queen H2 is a checkmate. Say for example, king H1 if you say, then I can simply play rook G2 here. The idea is queen H2 checkmate. So after king to G2 scores, oh my god, bishop H3 check. My god, what will you do? King to H1 is the only square. Queen to F2. The idea is queen G2 mate. Rook G1, queen F3. This is Laskar for you, my dear friends. So that is why he played D4. Idea is that if you go your bishop behind, bishop G4, rook F2 will just kill you up. And here comes the main moment of the game. Now this position is actually plus for white, if I can tell you something. But you have to find the exact correct method of play. If you find it, white will win this game for sure. For sure. And the only correct way to win, Ridan, can you speak up? Can you tell me the best move here for white? What do you think? What should white play in this position? Don't try to protect your piece. You have already taken one piece. No problem. No problem. Give it back. But try to increase your position. Try to make your position better. Bishop F4 is very bad. Of course, he can capture directly by queen or rook. H3 is not a good move here. Rook to F1 is again not a good idea. You are simply giving it back. The pawn will also be alive here. Ridan, can you speak, my dear Ridan? No? Any idea? The simplest move is play queen e2. Simplest move in the world. Don't let the rook or the queen attack here. And once he capture your piece, please capture queen into pawn. And now this is a weak pawn, weak pawn, weak pawn, weak pawn, and there is no attack. The knight will come to c3.
The rook will come on a2 d1, and it's a very, very, very good position for white. There is no attack now. Queen at h4 is doing nothing in the world. Let me tell you now. This queen e3 is very, very good defending everything. So trust me on this. Queen e2, and black will resign for sure after 10 moves. I guarantee that. Had Marshall played queen e2. But it is a very psychological move. It is very difficult for a player who has got a piece extra to give it back. It's a very difficult move. So what did he do? He played one of the very bad moves, pawn to g3. Very bad move. Very bad. Pawn g3 was played here. So now my question is, what do you think? What is the best move which black should play here? I don't know whether it was played or not, but what do you think? Black should play. What is the best move? So there is a poll, my dear friends. Please participate. What is the best move which black should play here? Queen f6, queen h3, queen e7, or is it d into e3, pawn into bishop? क्या लगता है आपको इस पोजीशन में ब्लैक का बेस्ट मूव? What is the best move which black should play here? क्वीन f6 0% लोगों ने कहा है अभी तक. क्वीन h3 71% लोग बोल रहे हैं, और क्वीन e7 भी बोल रहे हैं काफी जने. d into a3 कोई नहीं बोल रहा. वेरी नाइस ऑडियंस. अगर कोई d into e3 कह रहा होता मेरा स्टूडेंट, तो मैं उसको कल से बोलता ऐसा है बेटा तुम घर पे रहो, मेरी क्लास में नहीं आना. d into e3 सबसे गंदी चाल है, क्योंकि वो पॉन से क्वीन मरवा लेगा. सीधी क्वीन मर रही है तो क्वीन तो बचानी पड़ेगी बेटा, ऐसा थोड़ी कि. Okay, let's end the poll. Well, and let's share the results. 67% लोगों का क्वीन h3 कहना है, 22% क्वीन e7, 11% क्वीन f6. Well done यार, क्या बढ़िया ऑडियंस है. Queen h3 is the best move, and Saket is asking me a very good question, why g3 is bad, and this is the reason. Queen h3 brilliant, अंदर घुस रहा है क्वीन यार. My God. अब ये समझ रहे हो, ये सारे स्क्वायर हैं, ये बिशप g4, बिशप f3, रुक f2, ये सारे आइडियाज आएंगे अभी, और ये तो मर ही रहा है. तो एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जस्ट इन केस आप जानना चाहो. इफ यू प्ले बिशप g5 हियर, आपको लगे अरे वाह पीस बचा लो, वाह मजा आ गया, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ओ माय गॉड, ब्लैक यहाँ पे खेलने वाला था रुक f2. कैन यू बिलीव दिस मूव? आइडिया इज क्वीन h2, क्वीन g2. कैन यू बिलीव दिस मूव? So after king into f2 which is forced, आजा बेटा तुझे प्यार दूं, queen h2 check, और गोरी भैया तो ये वार दूं. अगर तुम king f1 जाओगे तो आजा बेटा बिशप h3 checkmate खा ले, गरम गरम मात लाया हूं. और अगर तुम king f3 आओगे तो तुम्हें लगेगा आप क्या कर लेगा, हाथी भी पिटा लिया, एक मोहरा पिटा लिया, चेक कोई है नहीं, बिशप चेक आती नहीं है, मार दूंगा राजा से, हाथी दूर पड़ा हुआ है अभी घुसता नहीं है, तुम्हें ऐसा लगेगा. लेकिन जो भी स्मार्ट खिलाड़ी है यहाँ, उसको मालूम है कि ब्लैक की चाल है पॉन h5 एंड व्हाइट मस्ट रिजाइन. देयर इज नो डिफेंस टू बिशप g4 चेकमेट. सब स्क्वायर ब्लॉक है, एवरीथिंग ब्लॉक. पॉन h5, कैन यू माय डियर फ्रेंड, मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ क्या चाल है रुक f2. तो इसीलिए g3 खराब चाल है. दैट इज द रीजन ऑफ g3 टू बी बैड. तो g3, क्वीन h3 नहीं खेला गेम में यार. He should have played. Laskar missed the move here, and he gave a chance, again a chance to Marshall, and he played the move queen f6. अब ये क्या कर दिया, क्वीन f6 करते उसको चांस मिल गया व्हाइट को. कैसे मिल गया? अब उसको यहाँ पर इमीडिएटली खेलना चाहिए था रुक टू f1. रुक f1 is the move here which should have been played, and then white could have hold the position. या फिर बिशप d2 भी खेल सकता है वो. बिशप d2 भी इतनी खराब नहीं है एक्चुअली, हालांकि खराब है क्योंकि क्वीन f2 चेक आ रही है और बिशप h3 पे घुस रहा है, और यहाँ पे बहुत लफड़े लग रहे हैं मात के, बहुत लफड़े लग रहे हैं, बहुत बहुत अटैक लग रहा है. ये रुक g1 आप खेलोगे क्वीन g2 बचाने के लिए. h5 इज द की मूव हियर. माय गॉड, बिशप g4 आइडिया है, बिशप f3 आ रहा है.
अगर तुम क्वीन H5 मारोगे, तुमसे बड़ा दुनिया में कोई पागल नहीं, जीवन आ रही है। कैन यू बिलीव? ये सब चाले हैं बेटे दुनिया की। किंग जीवन और आजा बेटा रुक F1, मात खा ले बढ़िया वाली। तो मैं, मेरे कहने का मतलब है क्वीन F6 पे भी, समझ रहे हो, अगर वो बिशप D2 चाले टाइप चलेगा, बहुत अटैक है, लेकिन फिर भी वो होल्ड कर सकता था। रुक F1 तो उसको करना ही चाहिए था यार। रुक F1 पे यहाँ पे होल्ड हो जाती है बाजी, मारना पड़े मारना पड़े मारना पड़े, पॉन से इसको मारना पड़े, और फिर तुम उसके बाद में नाइट डेवलप करके कुछ कुछ करके एंड गेम आ जाएगा, ये पॉन अकेली पड़ी रहेगी, यू कैन डू समथिंग, यू कैन होल्ड। तो हुआ क्या गेम में, क्वीन F6 इज अ बैड मूव, बट व्हाट व्हाइट प्लेड इज अगेन अ बैड मूव, बिशप इनटू D4। उन्होंने ये मार दिया, तो इसने मार लिया, और अब उन्होंने खेला रुक F1। अब उन्होंने मार लिया, बोले यार अटैक खत्म, सब खत्म। अब ये पोजीशन आ गई गेम में, एंड नाउ मार्शल को ऐसा लगा कि सब होल्ड हो गया, एवरीथिंग इज होल्ड, एंड गेम आ गया, और E3 पे भी पॉन नहीं है। लेकिन अगर ये पोजीशन आपको ध्यान से समझ में आ जाए, जो कि वर्ल्ड लेवल पे कास्परोव, टेरेस, बड़े बड़े लोगों ने एनालिसिस किया, आई विल शेयर द लिंक विद यू वेरी सून। मतलब क्लियर विन पोजीशन है ये ब्लैक के लिए। दिस एंड गेम इज अ क्लियर विन पोजीशन फॉर ब्लैक, बट ही हैज टू प्ले वेरी एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेट खेलना पड़ेगा। तो पहली मूव यहाँ पे जो ब्लैक ने चाल चली है, वो है सबसे ही बढ़िया चाल, बेस्ट मूव ऑफ द मैच अकॉर्डिंग टू मी। और वो आप ढूंढ सकते हो क्या माय डियर फ्रेंड्स? कैन यू फाइंड दैट मूव? और ये आ गया आपके लिए पोल, फाइंड द बेस्ट मूव ऑफ ब्लैक हेयर। बिशप H3 चेक, बिशप E6, king to F7, rook to B8। what do you think is the best move of black? बहुत डिफिकल्ट चाल है ये, एंड बहुत ही जबरदस्त चाल है ये। बिशप H3, बिशप E6, किंग F7, और इज इट रुक टू B8? what is the best move of black here? और यही मूव है अकॉर्डिंग टू मी जिसने लास्कर को ना कि ये गेम जिताया, बल्कि इस टूर्नामेंट में बहुत आगे ले गया। 8-0 से जिताया 1907। उसके बाद वो एक दो और लोगों से जीता, फिर वो श्लेटर करके एक प्लेयर से आया जिसमें लास्ट राउंड तक बाजी गई। अगर लास्कर जीतेगा तो वर्ल्ड चैंपियन रिटेन करेगा, एक पॉइंट पीछे चल रहा था वो श्लेटर से 1910 में। उसने लास्ट राउंड में श्लेटर को अपना बेस्ट खेल के हरा भी दिया, और उसके बाद वो 11 साल और वर्ल्ड चैंपियन रहा लास्कर। टिल 1921 ही वाज द वर्ल्ड चैंपियन। आज तक का रिकॉर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियन, और ये रिकॉर्ड आप में से भी कोई तोड़ सकता है। एक्चुअली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चेस में आगे करियर बनाना चाहता है, यू कैन ब्रेक दिस रिकॉर्ड ऑफ 27 years ऑफ वर्ल्ड चैंपियन इन द हिस्ट्री। इट हैज नॉट ब्रोकन येट। 27 years ऑफ द लॉन्गेस्ट रेन ऑफ वर्ल्ड चैंपियन। कार्लसन भी ऑफ कोर्स है, लेकिन 27 years इज टू मच आई गेस। ओके, तो क्या किया लोगों ने? लेट्स एंड पोल एंड लेट्स शेयर द रिजल्ट्स। 36% लोगों का कहना है बिशप H3, 18% बिशप E6, 9% किंग F7, 36% लोगों का कहना है रुक B8। नाउ बिशप H3 चेक भी अच्छी चाल है, बिशप A6 भी अच्छी चाल है, बिशप E6 भी बढ़िया है, किंग F7 भी बढ़िया है, ये सब अच्छी चाल है, मगर इनमें से कोई भी विनिंग नहीं है। देयर इज नथिंग विनिंग। द क्लियर विनिंग मूव, जो कि मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि विनिंग करेगा ब्लैक इस आइडिया से, इज रुक टू B8 व्हिच वाज प्लेड इन द गेम। अब रुक B8 दिखने में एकदम ऐसा लग रहा है क्या फायदा है, ऐसे कोई थोड़ी जीत जाओगे तुम रुक B8 करते ही। तो तुम सोच के देखो, रुक B8 पे गाइस व्हाइट क्या करेगा? आई एम ट्राइंग टू कैप्चर B2, देयर इज ओनली वन मूव B3, और कोई चाल ही नहीं है। तो B3 फोर्स करा के मुझे फायदा क्या मिला? व्हाट इज द फायदा? द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट दिस स्क्वायर इज नाउ डिवॉइड ऑफ द नाइट। जो नाइट D2 और नाइट B3 आता, वो मेरी D4 पॉन पे अटैक करता, या अगर मैं C5 खेलता तो C5 को भी अटैक करता। वो नाइट B3 पे अब लाइफ में नहीं आ सकता। ही कैन नॉट कम द नाइट टू B3। द B3 स्क्वायर इज completely devoid for the knight. Please understand, that is the biggest advantage of rook to B8. Point number 1. पॉइंट नंबर 2, अभी तुम्हें पता चलेगा आगे का, जब गेम हुआ तब पता चलेगा रुक B8 क्या चाल है। अभी तो तुम्हें सुपरफिशियली लग रही है,
लेकिन ये जो है ना रुक B8 जो इसने खेली है और जो आगे की चालें चली है, वन ऑफ द बेस्ट 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 मैन्योरिंग ऑफ रुक एवर है. व्हाट इज डिवाइड? डिवाइड मतलब उस स्क्वायर पे रोक देना. डिवाइड, DEVOID, डिवाइड. डोंट डिवाइड मी ऑफ योर लव, मुझे अपने प्यार से दूर मत करो. डिवाइड, साकेत. तो रुक टू B8, pawn to B3, and now please tighten your seat belt and try to learn the rook maneuvering. तुमने इससे अच्छी लाइफ में रुक मैन्योरिंग नहीं देखी होगी. And now the move played by black was rook B5. My God. And now he wants to go to H5 to attack the H4 pawn, H2 pawn. ये उसका रुक का आइडिया देखो जरा यार. रुक मैन्योरिंग. रुक मैन्योरिंग का मतलब मूवमेंट ऑफ द रुक. मैन्योरिंग ऑफ पीसेस, मूवमेंट. कौन सा चीज कहां जा रही है, कौन सा पीस किधर जा रहा है. तो रुक टू B5 was played here. And here comes the second error, pawn to C4, error number 2 of the game. इस एरर की दो वजह. पहला, उसको रुक H5 तो आना ही था, वो तो आएगा ही आएगा. दूसरा, अब ये पॉन बन गई पास पॉन. n% करने के लिए तो उसने चलाया बेटा, n% थोड़ी करेंगे हम, वो नाइट से ही मार लेगा, इसीलिए तो चलाया उसने. अब हमारी ये पास पॉन बनेगी, C5 आके सपोर्ट और हो गया, और वो नाइट निकाला नहीं, जो कि उसको यहाँ निकाल के नाइट C4 आना चाहिए. कुछ तो खेल भाई. तो यहाँ पे भी अगर मैं तुम्हें बताऊं थोड़ी सी एनालिसिस, नाइट D2 was the best move here. And after rook to C5, knight to C4, bishop A6, king E2, bishop into knight, pawn into, rook into, and king to D3, rook C3, king D2 और king into pawn. Here white can hold this position. ये भी hold करी जा सकती है. आप obviously एक दो pawn पीछे हो, लेकिन king advance हो गया है. King is active right now. रिदान मजा आ रहा है कि नहीं रिदान? हाँ सर. आ रहा है ना समझ में बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. तो इसीलिए रुक टू B5, व्हाट अ मूव प्लेड बाय ब्लैक हियर. और नाइट D2, नाइट C4 आइडिया, किंग को आगे लाओ, दैट इज द ओनली वे टू डिफेंड. C4 नेक्स्ट मिस्टेक. और अब आप गेम देखो यार, रुक H5. अब ये मर रही है, क्या करोगे, कैसे बचाओगे इसे? कौन मर गई? फ्री की. हाउ विल यू सेव? ओ हो. H4 किसी ने लिखा है. ओ H4 इज अ वेरी बैड मूव, क्योंकि वो G5 खेलेगा. अब ये पॉन फ्री की मरी गई, क्योंकि अगर तुम HG मारोगे तो आजा बेटा, रुक H2 भी विनिंग है, तुम्हारा नाइट वाइट सब मर गया, और रुक H1 भी विनिंग है, दोनों विनिंग है. रुक H2 भी विनिंग है, क्योंकि अब ये नाइट D2 नहीं आ सकता. नाइट A3 कभी भी लाइफ में निकलोगे तो रुक H1 से स्क्यूअर खा लो. स्क्यूअर बहुत ही खतरनाक पोजीशन हो जाएगी, रुक H2 पे घुस गया. तो इसीलिए जब उसने रुक H5 खेला तो मार्शल ने ऑब्वियसली G1 खेला. अब देखो अब कितना ज्यादा दूर हो गया. अब ये रुक यहाँ तो आके कोई फायदा नहीं. अभी तो A5 A3, अभी ये इसको भी डिफेंड करना है, तो उसने खेला C5, pawn to C5 डिफेंडिंग इट, कोई दिक्कत नहीं. अब वो आया नाइट D2. अब आराम से ये किंग ऊपर. ब्लैक के पास में धीरे धीरे तुम देखोगे व्हाइट के पास चालें ही खत्म होने वाली है. जो जुआंग में आने वाला है वो. देयर विल बी नो मीनिंगफुल मूव रिमेन आफ्टर सम टाइम, रिमेनिंग आफ्टर सम टाइम. नाउ रुक F1 चेक. दिस इज द नेक्स्ट एरर. कई लोगों को चेक देने में बड़ा मजा आता है. अरे भाई उसको तो आना ही इधर है, वो आ गया. अब तुम्हारा रुक F7 F8 तो आएगा नहीं. चेक देके फायदा क्या हुआ? A2 कमजोरी रहेगी. अब वो आराम से इसको भी अटैक कर सकता है कभी तो रुक लाके. तो चेक की जरूरत नहीं थी. नाउ द मूव प्लेड नाइट F3 should have been played here. ये भी थोड़ा सा बेस्ट डिफेंस होता, बट स्टिल ब्लैक विल विन. नाइट F3. तो गेम माइट कंटिन्यू. बिशप G4, नाइट H4, rook E5 attacking the E4 pawn, rook to F4, bishop D1 idea, bishop C2, bishop B1, check, knight into G7, bishop C2, rook F7 and rook E7 is a clear winning position for black. रुक लड़ने ही पड़ेंगे. अब ये कमजोर है और ये बिशप B1 से सारी लाइन से पहले कमजोर है. ये तो पास पॉन इमीडिएट बढ़ेगी, और अगर तुमने ये मरवा ली है तो ये ए वाली पॉन तो खतरनाक पॉन है. तो कमिंग बैक, इस पोजीशन में उन्होंने खेला A3. अब ऑडियंस पोल नहीं है मेरे पास, लेकिन कैन यू टेल द बेस्ट मूव ऑफ ब्लैक हियर? अगर आपने किसी ने लिख दिया, जीनियस मान लूंगा मैं. मैंने आपको हिंट भी दी थी, रुक का बहुत भयंकर गेम होएगा ये. तो वो रुक यहां से रवाना होके इधर आया, अब वो इधर से इधर आया.
अब यहाँ पे उसने उसको किंग को ब्लॉक करा दिया. अब व्हाट इज द नेक्स्ट आइडिया? कैन यू गेस द बेस्ट मूव ऑफ ब्लैक हियर? ऑडियंस प्लीज राइट इन चेक. रुक G5 किसने लिखा है? D3 किसी ने लिखा है? रुक E5 लिखा है. ओके ओके, व्हाट एल्स? शाबाश. कम ऑन गाइस. बिशप टू B7 लिखा है कई लोगों ने. बिशप H3. ओके. And now the move which I wanted has come from Ilakshi. Well done. Very, 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 very well done. Jitni तारीफ उतनी कम. The move is very difficult to find. And I have a feeling, Ilakshi, if you can write in chat, आपने ये गेम देखा तो नहीं है पहले? बहुत ही अच्छी चाल लिखी है आपने. मजा आ गया है. दिल खुश हो गया. Very well. Ilakshi, can you write in chat? देखा तो नहीं आपने? No sir, she is writing. Well done. The move is rook to H6. Brilliant move. अब यार तुम रुक का मैन्योरिंग देखो भाई लोगों. यहां से चालू किया, इधर आया, इधर से इधर आया, अब इधर आ गया. अब इधर क्यों आया है? वो आया है रुक A6 आने के लिए. और अब वो अटैक करेगा A3 को. माय गॉड. और वो धीरे धीरे उसका जब रुक A1 फोर्स हो जाएगा, सारे मोहरे ब्लॉक कर देगा. फिर किंग E5 ले आएगा, D3 कर देगा, किंग D4 घुस जाएगा, इस बिशप को G4 में बिठा देगा. कोई मोहरा कुछ हिलेगा नहीं. 2-3 मिनट रुक जाओ बस. 2-3 मिनट रुक जाओ. रुक H6, H4. अब देखो ध्यान से गेम. रुक A6, रुक A1, बिशप G4. अब नाइट F3 भी नहीं आता. किंग F2, किंग E6. आराम से चालें खत्म होने वाली है तुम्हारी. A4, किंग E5, किंग G2. अब वो आ गया रुक F6. अब बोल बेटे. रुक E1, D3. आ रहा है किंग D4, रुक F1. बोले यार रुक तो लड़ ले कम से कम. मेरा बेकार रुक है, तेरा अच्छा रुक है. बोले लड़ ले, तेरी इच्छा है ना, चल लड़ ले. किंग D4, 12 पॉन इनटू. किंग F2. अब देखो धीरे धीरे जुगजुआंग आने वाला है. C6, चाले ही नहीं है उसके पास. A5, A6. चाल क्या दोगे? अगर तुम किंग हिलाओगे तो किंग E3 घुस रहा है. वो किंग C3 आके भी जीत सकता है वैसे भी, बट नहीं. आराम से पहले तू चाल चल ले, तेरी जो भी चल चलानी है. कोई चाल नहीं है उसके पास. नाइट टू B1. नाइट हिलाना पड़ा फाइनली. नाइट टू B1. एंड नाउ किंग इनटू E4, किंग E1, बिशप E2. हालांकि बिशप E2 की इतनी जरूरत नहीं थी, बट चलो. चेक. किंग टू E3, नाइट B1, F5, नाइट D2, H5. सब चला दिया, सब जुगजुआंग. आजा बेटा. नाइट B1, किंग F3. अब आके वो धीरे धीरे G3 मारेगा. नाइट C3. अब वो थोड़ा काउंटर प्ले लाना चाहता है. A4 मार के C5. इट्स टू लेट नाउ. किंग G3, नाइट A4, F4. ये रवाना हो रही है F3 F2 F3. तो उसको A6 मारने का टाइम ही नहीं है. नाइट E4, किंग टू F4, D6, C5, B4. अब वो ट्राई कर रहा है पासा निकालने की. B3. माय गॉड, कितनी बचाओगे? नाइट C4, B2 को रोक लिया. किंग G3. अब F2 आ रही है. अब बोल. नाइट E3. अब B2 आ गई. अब बोल. अब उसने कहा यार अब क्या बोलूं यार, नेक्स्ट मूवी क्वीन बन रही है. उसने बोला रिजाइन. क्या करेंगे हम, बताओ यार. तो अनंत इज सेइंग सर कैन यू गो बैक. कहाँ जाऊं बेटा वापस, जल्दी बताओ. लगभग किस पोजीशन में? इधर. जब रुक रुक बोर्ड पे, यहां पर. हाँ रुक F1 पे खेला उसने. चलो ठीक है, गुड. अब बोलो व्हाट्स योर डाउट अनंत. राइट इन चैट. रुक F1, बिशप. अरे बेटा नाइट के सपोर्ट पे रुक. ओहो, बिशप H3. गुड आइडिया अनंत, वेल डन. पर वो किंग से मारेगा. अब तुम रुक से रुक मारोगे, नाइट का सपोर्ट है.
There is a support of the knight on the rook, but you thought well. Very good. Good boy. Very good. नहीं तो अब तुम्हें क्यों मारना है यार? अब तो पीस पिटा लिया यार. अब थोड़ी अब तुम किंग E3 भी नहीं आ सकते. वो वापस किंग G2 आ जाएगा. किंग E3 सब रुका हुआ है. पीस मरा लिए तुम बिना बात के. अब नहीं है इसमें. अब उसका किंग बहुत क्लोज आ रहा है इमीडिएटली. चलो वेल डन यार. तो मजा आया कि नहीं भाई लोगों? डिड यू एंजॉय द गेम? रिदान कैसा लगा आपको? अच्छा था। है एंड गेम तगड़ा था कि नहीं एकदम? Well done. Very good. Very good. Sharvi is writing awesome. Arjun is writing very nice. Yes, sir. Yes, sir. So, did you guys enjoy? Ilakshi, कैसा लगा आपको? Please write in chat. Rahul, Arisha Jain, Arav, Sai Jaswant, Anuj Shah is also here with us. Anuj, मतलब Arjun. Arjun is here. Arjun, right? Very interesting. Very interesting. Arisha is saying awesome. Okay, my dear friends. So this was our game. And now let's look at the brilliancy. Now this position occurred in 1907. Quite coincidentally, both things happened in 1907 of today's games. It is just a coincidence, my dear friends. This position was played between Ahuyus, A-H-U-E-S, Ahuyus versus Scores, S-C-H-O-R-I-E-S, Scores. तो स्कॉरिस जो है इनका नाम रखा गया होगा इनके जो हस्बैंड है, इनके जो पापा हुए होंगे, मम्मी को इनकी खूब स्टोरी सुनाते होंगे. रोज रात को स्टोरी सुनाओ. स्टोरी स्टोरी स्टोरी. टेल मी स्टोरीज ना, टेल मी स्टोरी. तो इन्होंने अपना बच्चा पैदा हुआ तो टी की जगह सी लगा दिया. स्टोरीज की जगह उसका नाम बन गया स्कॉरिस. स्कॉरिस, S-C-H-O-R-I-E-S. ऐसा कुछ इनका कहानी बनी होगी. स्कॉरिस. तो ये ड्रेसडेन में गेम हुआ था. अब आप ये पोजीशन अगर आप ध्यान से देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ब्लैक इज क्लियरली विनिंग, इफ यू कैन एग्री विद मी. ओ माय गॉड, लुक एट द अटैक ऑफ ब्लैक. यू नो, black is clearly in advantageous position. There is a deadly pin on the b file. The moment you move your bishop, rook into rook will happen. Knight देखो कैसा शानदार बैठा है यार. और पौने गिनो जरा. 1 2 3 4 5, जबकि व्हाइट के पास है 1 2 3 4. तो दिस इज अ क्लियर एडवांटेजियस पोजीशन ऑफ ब्लैक. एंड हमेशा की तरह ब्लैक बहुत खुश खुश घूम रहा था लाइफ में. आराम से इधर जा रहा है उधर जा रहा है. आज तो जीत लेते हैं. लोगों ने उसको कहा होगा यार आज तो आप बहुत बढ़िया चालें चल रही हो. तो उसने कहा होगा हाँ खेल लेते हैं. ऐसे ही बढ़िया खेल चल लेते हैं, कभी कभी खेल लेते हैं. ऐसा कुछ हुआ होगा. Now in this position, if I tell you, will you believe if I say that in 3-4 moves black is going to get checkmated? Will you believe me? Oh my god. So there is an amazing move which was played by white, and here comes the poll, and I'm sure all of you is going to answer the poll as you know me by now. So what most amazing move did white play here? देखो कई लोगों ने तो ऑलरेडी कर दिया. H4, bishop to D3, queen E3 और any other super brilliant move. अब तक 4-5 लोगों ने 100% लोगों ने any other super अब तक क्या पीपल नो मी बाय नाउ. बोले यार ये सुपर ब्रिलियंट ही डाली होगी इन्होंने. एनी अदर ही होगा. 88% लोगों ने अभी तक किया है एनी अदर सुपर ब्रिलियंट मूव. व्हाट मोस्ट अमेजिंग मूव डिड व्हाइट प्ले हियर? क्या चाल चली गई है इस पोजीशन में? एनी अदर सुपर ब्रिलियंट मूव लोगों ने 90% लोगों का कहना है एनी अदर सुपर ब्रिलियंट. ओके, लेट्स शेयर द रिजल्ट्स. 11% लोगों का कहना है क्वीन E3. ओके, अब यार ये पोजीशन में यार ऐसा कैसी मूव ला देगा यार? कैन यू बिलीव? मतलब ये तो क्लियर मेरे को लग रहा है बहुत ही जबरदस्त ब्लैक को एडवांटेज है. और उसका किंग एकदम सेफ पड़ा है. मोहरे इतने दूर है व्हाइट के. कर क्या लेगा ये? क्या तरीका है ये? ओ माय गॉड. So as I told you, black was very happy in his life, and when he came on the board, he found that bishop A3 was played here.
attacking the rook. And of course, rook into rook is hanging, where black thought for some time and he's like, even if I don't capture, what will I do? So he captured the rook here. रुक इंटू रुक, फ्री का रुक पिट गया. उसने सोचा क्या कर लेगा, एक बिशप की चेक देगा, मारूंगा, क्वीन H6 चेक देगा, किंग G8 आके बैठ जाऊंगा, कर क्या लेगा, मोहरे दूर है, बिशप कोई काम का नहीं, हाथी भी पिट गया, क्या कर लेगा ये. तो जैसे ही उसने रुक इंटू रुक मारा, सडनली द लाइटनिंग स्ट्रक, एक बिजली की चमत्कार हुआ, बिजली की आवाज आई जोर से, उसकी जिंदगी से ऐसा होता है ना, ये क्या हो गया मेरे साथ. And all of a sudden, white played queen H6 check here. Can you believe this move, my dear audience, whosoever is watching in Zoom or in live YouTube or who will watch this later? Can you believe this idea? Check. My God! अगर तुमने इसको नहीं मारा तो यहाँ बचाया, तो आजा बेटा, तुझे प्यार दूं, गोरी भैया तुझे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, और चेकमेट खा ले बेटा. और अगर तुमने यहां चला तो भी यही चेकमेट खा ले, और अगर तुमने यहां चला तो भी सेम चेकमेट खा ले. तो इन अदर वर्ड्स तुम्हें इसको मारना तो पड़ेगा. मार लिया, मर गई क्वीन. अब आजा बेटा, चेक खा ले, चेक, स्क्वायर ब्लॉक, स्क्वायर ब्लॉक, स्क्वायर ब्लॉक. आजा किंग H5, G5 भी आ सकता है. किंग H5 आएगा तो पहले बिशप चेक खा. अब ये स्क्वायर ब्लॉक है, ये G6 ब्लॉक है, H4 G4 ब्लॉक है बिशप से, यही आना पड़े. और अब खा ले पॉन चेकमेट. H4 इज अ चेक एंड मेट. ये क्वीन तेरी आराम कर रही है, रुक आराम है, बहुत खुश हो गया था रुक मार के. कैन यू बिलीव माय डियर फ्रेंड्स. तो क्वीन H6 चेक, किंग इनटू H6, बिशप F8. अगर तुम पहले किंग G5 आओगे तो पहले H4 खा ले, इसमें क्या प्रॉब्लम है. अब बोलो कहां जाओगे. ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये इधर बिशप रोक लिया, ये पॉन रुकी हुई है, या दो ही घर है, H5 G4, H5 G4, H5 G4, कहीं भी आ जाओ और बिशप से मात खा लो. चेक एंड मेट. यहाँ आओगे तो भी चेकमेट, सेम बिशप. तो तुमको इस पोजीशन में ये डिसाइड करना है कि तुमको पॉन मेट खानी है बाद में, या बाद में तुम्हें बिशप से चेकमेट खानी है. ये तुम एक डिसीजन ले सकते हो. व्हाट अ टफ डिसीजन, व्हाट अ टफ डिसीजन, कि पॉन से मात खाएं या बिशप से खाएं. तो ऑब्वियसली बिशप से खाना बेटर है. कई बार ऐसा लगता है यार, पैदली मात खा ली यार, पॉन से मेट क्यों खाएंगे हम, बिशप से खाएंगे. और साला अपनी भी इज्जत है. ऐसे ही थोड़ी पॉन से मात खाएंगे, इज्जत से मरो. अबे यार ये क्या तरीका है यार, बिशप F8, क्वीन H6, क्या है यार, ये कौन सा गेम है यार ये. इधर आओगे तो भी मैं. वापस देखो यार जरा यार. इलाक्षी, यू आर टू गुड अ प्लेयर. वेल डन इलाक्षी. only she was able to tell this idea. यार ये तो कितना भगवान आइडिया है यार. मतलब ये पोजीशन दिखने में तो एकदम ऐसा लगता है रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है भाई, पागल है क्या, कोई इज्जत नहीं है इसको. Why is he not resigning? और ये ले बेटा बिशप A3. मजा आया कि नहीं यार ऑडियंस. स्पीक अप यार, बताओ, चैट पे लिखो कैसी लगी आपको मूव ऑफ द डे. गाइस प्लीज राइट. अमेजिंग, ऑसम, मजा आ गया. अमेजिंग मूव, आउट ऑफ द वर्ल्ड, अमेजिंग. ओके, थैंक यू सो मच. वाओ, ब्रिलियंट. चलो थैंक यू. अब आ जाओ किस पे, होमवर्क पे. तो मेरे ख्याल से होमवर्क जो था वो ये था, जितना मुझे याद है. ये पोजीशन लानी थी 4 चाल में. बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई इस बार मेल किया, थैंक यू सो मच. और 3 लोगों को हमने रैंडमली चूज किया है फॉर जी पे. आई ऑलरेडी डन इट. अर्जुन, अनंत एंड जागृत मोदी. इन तीनों को आई हैव ऑलरेडी गिवन प्राइजेस. 100 रुपीज का जीपे प्राइज आई हैव ऑलरेडी गिवन. वेल डन. इलाक्षी, शार्वी, सॉफ्टी, अरीशा, आई थिंक वन मोर स्टूडेंट आई फॉरगॉट. 4-5 लोगों ने और दिए थे, बट ऑब्वियसली इट वाज रैंडम लॉटरी, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन प्राइजेस. ओके, तो ये क्वेश्चन था. और क्वेश्चन बोला गया है कि ये पोजीशन आपको 4 चाल में लेके आनी है. हाउ टू गेट दिस पोजीशन इन एग्जैक्ट 4 मूव्स.
तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आंसर उसका ये है D3, A6, क्वीन D2, A5। अभी तक दो दो चालें हो चुकी है। क्वीन टू H6, भगवान चाल। नाइट इंटू D4, व्हाइट की चौथी चाल। नाइट G8 एंड दैट्स ऑल। ये आ गई वो पोजीशन जो हमें चाहिए। चार चालों में वी हैव गॉट द पोजीशन व्हिच वी वांटेड। सो सच पोजीशंस आर कॉल्ड एज प्रूफ गेम्स। एंड चेस में रियल गेम में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम ये सब सॉल्व करोगे, टाइम दोगे, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका डेफिनेटली बढ़ेगा। आई गारंटी दैट। तो जरूर किया करो। तो हियर कम्स द होमवर्क फॉर टुडे, और ये है आपके सामने होमवर्क फॉर टुडे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ऑब्वियसली यूट्यूब पे आप 100 बार देख भी सकते हैं। द क्वेश्चन इज, हाउ कैन दिस पोजिशन अकर इन एग्जैक्ट 4 मूव्स? प्रूफ गेम इन फोर मूव्स। व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक। और ये पोजीशन आ जानी चाहिए जो गेम जो बोर्ड पे दिख रही है। व्हाइट की क्वीन नहीं है, व्हाइट की पॉन D3 पे है। ब्लैक की भी क्वीन नहीं है, लेकिन ब्लैक की एक पॉन E5 है और एक F6 है। बाकी सब एज इट इज रखा हुआ है जो दिख रहा है। तो ये पोजीशन हमें लेके आनी है एग्जैक्ट 4 चाल में। प्लीज मेल बाय वेडनेसडे माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज पार्टिसिपेट, मेल करिए, आपको प्राइजेस भी मिलेगी। एंड यू कैन मेल एट chess with Gaurav Bakliwal @gmail.com, chess with Gaurav Bakliwal @gmail.com। वेडनेसडे तक आपको मेल करना है। तो रिदान, मजा आ रहा है कि नहीं? रिदान, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत वेरी मतलब गुड, वेरी गुड। अब यार मुझे एक बात बताओ। हाँ, लिंक मैं देता हूँ। अभी मीटिंग छोड़ना नहीं, मैं लिंक अभी चैट पे शेयर करूंगा वंस आई स्टॉप द लाइव स्ट्रीम। तो लिंक मैं शेयर करता हूँ। साकेत एंड एवरीवन, यू हैव टू बी हियर। हाँ, तो अभी रिदान बताओ। रिदान, यू वांट टू स्पीक? थैंक्स बोलो। thank you, Gaurav sir, for giving this opportunity to volunteer for the event. I enjoyed every bit of it. It was great fun to interact with you as well as the lovely audience. It indeed gave me a nice platform to learn chess with you as well as to remove the fear of speaking in public platform. Thank you, sir. Thank you, everyone. Very good, Ridan. Very well done. Very good. You are looking very handsome today. Is this your favorite color? The T-shirt that you are wearing? You like this color, it seems. Yes or no? There was all be a teacher. और भी है। Oh, very good, very good. Okay, audience. Okay, very well done. Next week we'll meet. There will be a volunteer, Vivan, very young. I think 6.5 years of age. So it's my, opportunity and privilege to interact with the young minds, young talent of the country. And if they can become grandmasters one day, of you never know. I mean, who can do what in the future. So it will be a great platform, great pleasure for us to share their childhood memories and everything. So I'll see next week, next Saturday. Thank you so very much. Well done. Thank you so much.